Good morning, dear students. Now we are going to start the last topic of chapter number 4, exception handling. So starting with this introduction of it, what is exception? So exception is a runtime error which arises during the execution of the program. You remember one thing, that it comes or it occurs during the execution of the program, not at the compilation time. That means when you will compile your program, it will never come, okay? But when you will execute it, so at that time it may be possible that your program will be terminate abnormally. So that means it is terminated because of the exception raised in the program. Okay? So exception is a runtime error which arises during the execution of the program. The term exception in Java stands for exceptional event. Okay? Now next is, so exceptions are nothing but some abnormal and typically an event or conditions that arise during the execution which may interrupt the normal flow of program. Take next, an exception can occur for many different reasons, include the following. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट what definition you have to write it here. आपको exception की definition लिखनी है. What you will write here कि exception is a runtime error which arises during the execution of the program. This up to this much you will write here. Okay, then you can write here and which may interrupt the normal flow of program. That's it. It is the definition for your exception. Then next one, the reasons because of which your error or exception may arise in your program. That first one is a user has entered invalid data. User has entered invalid data. For example, if a string is required and you are going to enter integer type of data into it. Okay, for example, if I write a string s and s is equal to integer dot %, so here it will not give any error, but when you will execute it, so at that time it will give the error because s is of a string type and you are going to give here what, integer type of value, right? Next, a file that needs to be opened cannot be found. The file which you want to open or in which you want to write something, and if it doesn't exist, अगर वो फाइल exist नहीं करती है या find नहीं हो रही है system में, तो that time also error exception can come. Next is a network connection has been lost in the middle of the communication or the JVM has run out of memory. So these are some of the cases when your exception may arise. Now if the exception object is not handled properly, the interpreter will display the error and will terminate the program. Simple. Next, so here, now if we want to continue the program with the remaining code, then we should write the part of the program which generate the error in the try block and the catch block. So अगर हम उसको प्रॉपरली वर्क कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्राई कैच ब्लॉक में यूज़ करना होता है. मतलब ट्राई और कैच ब्लॉक का हम यूज़ करके उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं. तो एक्सेप्शन टर्न्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम control and sends to the related catch block and should display error message for taking proper action. This process is known as exception handling. So we have written the definition of exception and you can write two examples also, that in which case the exception can occur. Then after that, exception handling definition you will write here. So what is exception handling? You can write here that it is a kind of mechanism. It is a kind of mechanism that is used to handle an exception that may occur at runtime by the use of through the use of try and catch block. So this is the complete definition of exception handling, right? This definition you can write. Moving on to next, the purpose of exception handling is to detect and report. See these two words, very important, detect and report an exception. Remember one thing कि exception handling क्या है, correct नहीं करता है errors को. Exception handling का काम जो है वो एरर को करेक्ट करना नहीं होता. करेक्ट किसको करना है? एट लास्ट यूज़र हैज़ टू करेक्ट द एरर. एक्सेप्शन कौन करेक्ट करेगा? यूज़र ही करेक्ट करेगा. सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या होता है? उसको हैंडल करना, यानी कि उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड करना एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट इट टू द यूज़र दैट विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. दिस इज़ द ओनली जॉब ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. उसको करेक्ट करने का काम जो है वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का
नहीं है, सिस्टम नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द यूज़र. सो यूज़ ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ओनली टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एन एक्सेप्शन सो दैट प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन एंड प्रिवेंट द प्रोग्राम विच इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट और स्टॉप द एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्शन. जिस वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से स्टॉप हो गया था या टर्मिनेट हो गया था एबनॉर्मली, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रॉपर एक्शन लेना है, ये डिसाइड कौन करेगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको ये बताता है प्रॉपरली कि क्या एक्सेप्शंस आपके प्रोग्राम में रेज हुई हैं. करेक्ट. Now, Java exception handling is managed by the 5 keywords, that is try, catch, throw, throws and finally. But mainly we use what? 3 block only, that is your try, catch and finally. We use only this 3. ठीक है. So first we will discuss these 3 only, try, catch and finally block. So try block is what we generally do in try block. Actually we write the part of the program or the piece of the code into the try block where there may be the possibility of exception to be raised. Means जहाँ पे exception आने की possibility होती है, उस particular code को, मतलब प्रोग्राम का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहाँ रखते हैं? into the try block. Okay. Next we are having what? Catch block. So catch block is mainly used to handle the exception that is thrown by try block. तो कैच का काम क्या होता है? उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलर प्रॉपर, मतलब क्या होता है? कैच क्या करता है कि हैंडलर्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स के हैंडलर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इट इज़. ठीक है. तो एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कैच ब्लॉक क्या करता है? एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करता है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि सिस्टम कैन ईजिली फाइंड आउट दैट विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इट इज़. ठीक है. और उसी के अकॉर्डिंग द मैसेज कि किस टाइप की एक्सेप्शन रेज हुई है, द मैसेज विल गेट प्रिंटेड टू द यूज़र, दैट विल गेट डिस्प्लेड टू द यूज़र. ठीक है. So that is the working of catch block. So in the try block you can write the piece of the code. Here is the given complete definition are contained in the try block. ठीक है. If an exception occurs within the try block, it is thrown. Now where it is thrown? It is thrown into the catch block, right? Then for catch you can write the definition. Catch block can catch the exception and handle it in some logical manner. Okay. So this is the definition for catch. Then we are having what? Finally. Look at here for your finally. Here it is. Finally, any code that absolutely must be executed before a method returns is put in a finally block. Means it contains those statements which must be executed, जिसको execute करना ही करना है, मतलब जो हम चाहते हैं कि ये statements तो execute होने ही चाहिए. Suppose if any printing statement is there, ठीक है, या कोई particular operation आप logical, आपने कुछ logical task perform कर रहे हो, तो वो आपको code अगर लिखना है, आप चाहते हो कि this code should be executed, it must be executed, so that part of the code you will write in which block? Finally block, irrespective of the exception thrown. Means if an exception will occur or not, but that part of the code will definitely going to be executed, right? So that is the working of finally block. Now if we come back to the throw and the throws. So throw is mainly used to handle the user defined exception. Throw is the keyword which is used to handle user defined exception, and throws is a keyword which is used to handle system defined exception. This is the difference between throw and throws. थ्रोज जो है वो सिस्टम डिफाइंड जो एक्सेप्शन होती है उनको डील करता है. थ्रो से हम अपनी खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं. थ्रो कीवर्ड से हम अपनी खुद का एक्सेप्शंस बना के उनको थ्रो करा सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वी कैन हैंडल इट बाय यूजिंग ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक. नाउ द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एडवांटेज एंड हाउ मेनी वेज आर देयर टू हैंडल एन एक्सेप्शन. ये दो क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं कि ये पहली चीज़ है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज, ये सब आएगा. तो एडवांटेज की अगर हम बात करें, सो एडवांटेज इज़ टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. दैट्स इट. एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग यू कैन राइट इन योर नोटबुक इज़ टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर इट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक, yes, how many ways are there, right? So there are two ways to handle an exception. There are two ways to handle an exception. First is using try, catch, finally block.
using try, catch and finally block, and by using throws keyword. So two methods are there to handle the exception. Okay. Now along with the definition of exception, you can also give the example of exception, that what kind of exceptions can come. ठीक है, तो आप definition के साथ उसका example भी दे सकते हो. जैसे example आपका हो सकता है कि input output exception, IO exception. फर्स्ट इनपुट और आउटपुट करते समय आपके पास एक्सेप्शंस आ सकती हैं. और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यू कैन राइट इट with the definition of exception that I forgot to mention in the starting. Array index out of bounds exception. Array index out of bound का क्या मतलब होता है? If you are trying to access the element of an array which is not in the defined range of the array. यानी कि अगर आपने डिफाइंड रेंज का मतलब है कि इफ़ सपोज द एरे साइज इज़ 5, यू आर टेकिंग वन एरे ऑफ साइज 5 एंड यू आर गोइंग टू एक्सेसिंग दी यू वांट टू एक्सेस 6th एलिमेंट. सो 6th एलिमेंट आप एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 5 ही उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, है ना. तो अगर आपका जो इंडेक्स है दैट विल नॉट बी प्रॉपर, सो इट विल गिव यू व्हाट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. देन वी कैन हैव व्हाट अरिथमेटिक एक्सेप्शन. We can have arithmetic exception. So arithmetic exception means like divide by 0. For example, if you are writing int a is equal to 10 divide by 0, so this will not give you any compile time error. अगर आप ये लिखोगे so compile करोगे so your program will compile properly, it will give no syntax error. But when you're going to run it, execute it, then it will give you what arithmetic exception, that any number cannot be divided by 0. Okay. Then we are having what null pointer exception also. Null pointer exception. Null pointer exception means what? कि if any variable is pointing to null and if you are trying to access some if you are trying to operate on that data on that location which actually doesn't exist, then it will give a null pointer exception. For example, string s is equal to null. Okay. And you are printing here SOP s dot length this, so it will give a null pointer exception. Reason, because s is null, that means nothing is there in that. यानी कि अभी तक कोई वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो जब पॉइंट नहीं कर रहा है तो उसकी लेंथ भी हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं. तो नल यानी कि कुछ है ही नहीं है ना, तो आप उसकी लेंथ कैसे प्रिंट कर सकते हो. सो दैट्स वाई इट विल गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, सो इट विल अगेन नॉट विल गिव यू एनी काइंड ऑफ सिंटेक्स एरर, बट at the same again it will give you what exception. Okay, so exceptions are mainly what runtime errors that may occur during the execution of the program. So that was all about it for your today. Chapter number 4 is over. Then in the next video we will start our 5th chapter. Thank you.